Assalamu alaikum everyone. How are you all? Sumaika and Fahad, off your cameras or kindly sit properly. Hope you all are good. Hello Mutiba, assalamu alaikum. How are you? Are you good? Why you people are not smiling? इतनी कोई टेंशन क्लास है क्या हमारी? Please smile first. Everyone please smile. Walaikum assalam Hamna. Okay. So 22 participants we have right now. We have to wait for more for a while. So Walaikum assalam Mutiba, Walaikum assalam Hassan. Everyone assalamu alaikum. And please be on time. आप सब टाइम पे आया कीजिए क्लास में ताकि हमारा ये टाइम भी मिस आउट ना हो. Okay. So Umayza is with us and Sumaika, Hadia, Vania, Mutiba, Star, Zaya. Rename yourself. Someone is with Star, Zaya करके कुछ नाम है. Please rename yourself. Otherwise, I'm gonna remove you within a minute. Umar Zaya, Zafir, Uruf Fatma, Muntaha, Ali Raza, Aska Sami, Zoya Zishan, Hifza, Sakina, Karina, Musfira, Umama, Abid, Hassan Amir, Asad. Okay. So, okay. How are you, ma'am? Alhamdulillah, I'm good. How are you all? Walaikum assalam, Karina. Walaikum assalam, everyone. Okay. So, as you all know that we are learning Unit 1, which is Lesson 1 related to maps. Okay. So, what we have studied in previous classes, we have studied about maps, what are maps. Then we have learned about kinds of maps. How many kinds of maps we have, by the way? Anyone from you, raise your hand. Okay, 4 participants are raising their hands. Okay. Sakina Farid, unmute yourself quickly. Yes, Sakina, how many kinds we have? 3 kinds of maps. Okay. Names? Political quickly map, and loudly. physical map, relief map. अपने माइक को थोड़ा सा करीब कर लीजिए बेटा, so we can hear you properly. Political map, relief map, physical map. Okay. Am I audible to you people? बिल्कुल clear आवाज आप सबको मेरी आ रही है? Am I clear to you? अरूफ फातिमा बिल्कुल clear सुन रही हैं आप मुझे बेटा? Okay, thank you so much. मुझे लगा कि अगर जिस तरह का इशू इनके साथ है तो मेरी आवाज में ना हो. चल, thank you so much everyone. Okay, then we have learned about longitudes and latitudes. We have already discussed out longitudes, kinds and maps. बहुत ज़्यादा कर लिया है तो अभी हम इसको इतना नहीं करेंगे, हम कल के टॉपिक को थोड़ा सा जो है टच करेंगे. Okay, then we have learned about equator. Equators are imaginary lines, and then we have done MCQs. And in yesterday's class, we started how to study a map, in which we have learned directions and grids. Okay. So, who's going to tell me about directions? What are directions? Anyone from you? Yes, miss, you are audible. Thank you, Hassan. Okay. So, who's going to tell me? Hania Hassan, this is not breakfast class ना. Off your camera और आपने क्लास के बाद खाना है, ठीक है? थोड़ा सा लंच ब्रेक को अपने रोक दीजिए यहीं पर. Okay. I have, yes, Aska, unmute yourself. This direction is a particular way to go from one place to another. Okay, ठीक है. Thank you so much, Aska. असलम सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में what is direction, so a direction is a particular way in which you can go from one place to another. Okay, Fawad Aslam. Yes, unmute yourself, Fawad. Yes, Fawad.
फवाद असलम, फवाद असलम, क्विकली माइक फॉरन अपना जो है हैंड रेस जब आप कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल आपने प्रिपेयर बैठना हो, टाइम जाया करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ठीक है? ओके, सो in how to study map we have done directions and grids. Okay, so touch कर लेते हैं थोड़ा सा what is direction. Those who were absent yesterday, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि डायरेक्शंस क्या थी और हमने क्या पढ़ा था. As everyone was very like confused about it, this topic or इस chapter से related आप सबके पास बहुत सारी confusion है. Confusion आपकी खुद की वजह से नहीं है, क्योंकि आप इसको घर पे बार बार रीड आउट नहीं कर रहे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा आपको एक दिन में ऐसे नहीं समझ आ सकता. यू हैव टू लर्न इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब जाके आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आएगी. ओके, एवरीवन इज क्लियर? ओके, direction is the particular way you have to go to get from one place to another. Okay, as Asta said. Okay, examples of direction include north, south, east, and west. Okay, as you can see in the picture, north is indicated by M, and then S indicated by south, and then west, then east. Okay, हमने कल एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी जिसमें आपने अपने हैंड्स अप किए थे और आप सबने जो है अपने हैंड्स के थ्रू बताया था कि ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस को आपने शो करके बताया था, ठीक है? सो directly up on a map is usually north, down is usually south, to the right is usually east, and to the left is usually west. Okay, so this was direction. And then in direction we have two types or two kinds of directions, which the one was cardinal directions and then another one was intercardinal in directions. Okay, in cardinal directions are the four main points of a compass. As you can see in the compass, we have four directions: north, south, east, and west, which are also known by their first letters, which is indicated by NSEW, which means north, south, east, and west. Okay, these four directions are also known as cardinal points. What we can say? Four main points of compass, or we can also say cardinal points. What we can say, cardinal directions के अलावा आप इसको क्या कह सकते हैं? और cardinal points. Okay, everyone clear? Okay, okay, thank you Hassan. हिफ्जा, इंस्टेड ऑफ क्लास, ड्यूरिंग क्लास आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता किया करें बेटा, ठीक है? आपका जो भी इशू है बेटा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या तो कॉल कर लीजिएगा या मुझे एक टेक्स्ट लीव कर दीजिएगा. आई विल कॉल यू. ओके, आफ्टर कार्डिनल डायरेक्शन वी हैव intercardinal directions, which we also called ordinal directions. Okay, as you can see in the picture, between the north and west we have northwest. Between points the cardinal directions are west, north, east, and south. Between the cardinal directions from the points of the compass, the intercardinal, also called the intermediate directions. Intermediate directions and historically ordinal directions are northeast. As you can see, in between the cardinal directions we have intercardinal directions. Okay, you can see in the picture north and west, and then we have intercardinal, which is northwest. And then we have southeast. In between the cardinal points of south and east we have southeast. And then in southwest, साउथ-वेस्ट कहाँ है? साउथ-वेस्ट है कार्डिनल पॉइंट से between southwest. Okay, and then we have cardinal points, which is north and west. We have northwest as a intercardinal directions. Everyone is clear now? Okay, वालेकुम अस्सलाम. आप लेट आई हैं शाम से क्लास में? उमैजा and Uruj. Okay. So who's going to tell me about the cardinal and intercardinal directions? I think it is enough for today कि मैं इतना सारा जो है वो previous class का आपको बताया, तो थोड़ा सा difficult है टॉपिक, तो मुझे लगा कि आज हमें इसको repeat जरूर करना चाहिए. Okay, सकीना फरीद, कोई ऐसा स्टूडेंट जो हाथ नहीं उठाता
उसका नाम मैं चाह रही हूँ कि उठा ले वो हाथ। हसन आमिर, हसन आमिर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। Assalamu alaikum, miss. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू हसन? आर यू I'm फाइन? fine. Yes, miss. अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यस हसन, व्हाट इज कार्डिनल और व्हाट इज इंटरकार्डिनल? Miss, cardinal directions are the main points of the compass. ओके, Four. आर द Four main points of the कंपास। compass. ओके गुड, ठीक। ओके, which are the four main points are? North, south, east, and west. Okay, that's really good. Thank you, Hassan. Unmute yourself again. Okay, anyone else? Intercardinal directions. Aska, you want to tell us? Intercardinal? Okay, unmute yourself then. Miss, intercardinal directions are the points अच्छा, between माइक करीब करें अपना। inter. Miss, अब आ रही है आवाज? Yes, yes, now you are clear. Intercardinal directions are the points between the cardinal directions. These intercardinal directions are also known as intermediate directions or historically ordinal directions, and Okay, uh, and it is north, east, south, east, north, west, southwest. well done, Aska. Thank you so much. Mute yourself again. Okay, so after intercardinal direction, we have learned about grids. Okay, so who's gonna tell me what are grids and how they look like? I'm not late. Okay, Shanze. Okay. फवाद असलम अस्कर, नो, अब आप तीनों को मैंने नहीं अनम्यूट करना थोड़ी देर तक। आई वांट शानजे वसीम। शानजे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा एंड टेल मी व्हाट आर ग्रिड लाइंस। यस Miss, शानजे, यस। grid line shows us the place where to go. The grid line shows the place where to go. Yes. Okay, anyone else from you people? Those who know much better than this? Okay, Hassan Amir. Hassan Amir, unmute yourself. Yes, Yes, Hassan. miss. Yes, What miss. are grid lines? Miss, grid lines are the lines, all the lines of longitude and latitude form a Well grid done. as shown on the map. Thank you, thank you, thank you, Hassan. So these all about yesterday's class. Today we have different topics to learn. Today we are going to learn about how to study map. में आपका एक और point था, which is related to keys. What are keys? Or and then the next and another topic we are going to learn today is using an atlas. Okay, using an atlas. Okay, so moving forward to keys. What are keys? Usually each map also has a key. It tells us what the symbols and colors used on the map mean. What does it mean? Every map has a key. साइड में होती है, कभी कहीं बनी हुई होती है मैप पे, आपको जो बताती है कि इसका, इस सिंबल का या फिर इस कलर का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि वो मैप में रिपीटेडली जो है वो चीजें शो हो रही होती हैं, तो फिर उसकी एक बाकायदा की बना दी जाती है जो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि यहाँ पे कौन सी जगह है या किस चीज को ये इंडिकेट कर रहा है। Colors, symbols and patterns helps us to find things more easily on a map. कलर्स की वजह से और सिंबल्स की वजह से हमारे लिए रास्तों को ढूंढना मजीद आसान हो जाता है। रास्तों को ढूंढना है, चीजों को ढूंढना है, या जो हम ढूंढना चाह रहे हैं उस मैप के थ्रू हमारे लिए वो और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्यों होती है कि ये इसका जवाब है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कीज आर इम्पोर्टेंट इन मैप, तो यू हैव आंसर बिकॉज ऑफ द कलर, सिंबल एंड पैटर्न्स हेल्प्स अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप। यानी कि हमारे पास हमारा जो काम है वो और मजीद आसान हो जाता है if we have key and map. Okay, we also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. Scale हमें बताता है कि कितना बड़ा एरिया है। और मिस I am answer wrong. कुछ हसन आमिर, yes हसन आमिर, what you wanted to say? Yes Hassan.
Unmute yourself, Hasan. यस मिस। Yes, what you wanted to मिस say? वो आपने हमें होमवर्क दिया था ना, वो एक मैप बनाना था, फिर उसकी चीज भी बनानी थी। अच्छा अच्छा, चले अभी कल के होमवर्क की डिस्कशन नहीं करेंगे, रिलेटेड टू टॉपिक रहना आपने, ठीक है? मिस ये वही। ओके, सो what are keys? Usually each map also has a key. हर मैप में अमूमन कीज मौजूद होती हैं. इट हेल्प्स टू व्हाट? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप. आपके पास जो मैप आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, आप उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो आपके लिए मजीद आसान कर देता है चीजों को ढूंढने में. जस्ट बिकॉज ऑफ की. दिस इज द यूसेज ऑफ कि क्या इसका इस्तेमाल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. इट मेक्स easy to find things. We also need to know how big the area actually is. देखिए मैप में जो है आपके पास एक्चुअल एरिया नहीं बना हुआ होता. मैप तो बहुत बिल्कुल पेपर साइज फॉर्म में होता है ना, या समटाइम्स इन अ चार्ट फॉर्म, बट हम उसमें पूरा एरिया नहीं दिखा सकते. उसके लिए वी यूज स्केल. दिस इज शोन बाय अ स्केल. ये स्केल के थ्रू आपको रीडिंग्स बताई जाती हैं कि एक्चुअली एरिया कितना बड़ा है. ठीक है? ओके हसनैन. ओके, understand? Okay, this is how actually key look like. As you can see in the picture, this is a park map. Okay, and you can see the compass or the directions in the picture. Also, you can see east on the right side, you can see the west on the left side, and you can see that on the upside you can see north, and downside you can see south. And in map you can see, अभी आप की ना देखें, अभी आप मैप में देखें, you have a slides, you have seesaw, you can see a lot of trees there, you can see flowers, ducks, benches, ग्रास, ये सब दिख रहा है. एंड देन आपके पास ये जो है स्विंग्स भी है. ठीक है? अब नाउ यू कैन सी द नाउ यू कैन सी अ की. इन की यू कैन सी अ ट्री, बेंचेस, स्लाइड्स, सीसॉ, सैंडबॉक्स, स्विंग्स, फ्लावर गार्डन, डक पॉन्ड एंड पाथ. यही सारी रिपीटेडली चीजें हैं ना मैप में. तो ये क्या शो कर रही हैं? आपको ट्रीज शो कर रही हैं, ये आपके पास बेंचेस हैं. तो आप की में जो है, जब ये आपके पास ये और वास्ट वे में जब यूज होती है, तो इसी तरीके से जो है इसकी की बनाई जाती है, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. व्हाट डज इट मीन? यस मिस. ओके नमीर. ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. व्हाट आर कीज, ताकि आप सबको जो है वो अच्छे से समझ में आए. Okay, so as you saw the picture earlier, uh, that picture is related to the key. Okay, usually each map also has a key. की देखी ना आपने किस तरह से थी साइड में, हर चीज को इंडिकेट किया हुआ था, हर चीज बताई हुई थी. इट टेल्स अस व्हाट्स द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप. मैप पे जो कलर्स थे, या पार्क मैप पे जो कलर्स थे, या डक्स थी, या जो भी था, की ने बताया कि व्हाट दे एक्चुअली आर. ओके, समटाइम्स आप कंफ्यूज होते हैं, बट मैप की वजह से आपको समझ आ गया कि ये चीज ये है. ठीक है? कलर्स थे उसमें, सिंबल्स भी थे, और एंड पैटर्न्स हेल्प्स अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप. अगर आप सिर्फ डायरेक्टली की को देखें, उसके बाद मैप को देखें, तो यू वुड इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द मैप, के मैप में आपके पास क्या क्या चीजें जो हैं वो शो की गई हैं. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. Okay. अभी स्केल भी आपके पास आएगा, और आपको अर्लियर पहले भी स्लाइड्स में आपको दिखा चुकी हूँ. ओके, आफ्टर की we have, for example, as you can see in example, 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth. ओके, अब मैप पे आप 1 किलोमीटर का मैप तो हमारा नहीं होता ना. मैप तो भी मैंने जैसे अभी आपको पहले ही बताया, इट इज लाइक इन अ पेपर फॉर्म और अ चार्ट फॉर्म. इतने बड़े होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़े बड़े मैप्स भी नहीं होते हमारे पास. तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो रियल में किलोमीटर के हिसाब से अर्थ पे है, वो हमें मैप पे सेंटीमीटर में फिर शो करना पड़ता है. 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज नॉट इजी टू शो ऑन मैप. ये आसान नहीं है दिखाना. दैट्स व्हाई हमें उसे 1 मीटर में कन्वर्ट करना होता है. इफ द मैप हैज टू शो अ वेरी लार्ज एरिया, अगर मैप में कोई बहुत बड़ा एरिया दिखाना हो, 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट
100 किलोमीटर। तो इट डिपेंड्स, मतलब ये वेरी करता है। अगर हमें इससे भी बड़ा 1 किलोमीटर से भी बड़ा एरिया दिखाना है, या 100 किलोमीटर दिखाने, या इससे भी ज्यादा बड़े एरिया दिखाने, तो 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिप्रेजेंट करता है 100 किलोमीटर को। Maps also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. आपके पास जो मैप होता है वो ऊपर टॉप पे, अभी जैसा आपने की में भी देखा कि टॉप पे उसके N लिखा हुआ था और नॉर्थ शो हुआ था, ठीक है। The compass rose shows the general direction. Compass rose क्या है आपके पास, जिसमें आपके पास ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं, okay, which we also call cardinal points, which is north, south, east, and west. Okay, this is what we call compass rose. Okay, the compass rose shows the general direction, and the arrow tells us where north is. Arrow हमें बताता है कि north है कहाँ। मिस ओके असद, ओके हम ना आप YouTube पे देख लीजिएगा जो पार्ट आपका मिस हुआ है। ओके, अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ दोबारा से, जो है वो कंपास रोज आपको दिखा देते हैं पिक्चर में, प्रीवियस पिक्चर्स में जो गुजरा भी है। ओके, सो here we are, as you can see in the last of a picture, ये आपके पास जो शो हो रहा है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, दिस इज कंपास रोज, व्हाट वी कॉल कंपास रोज। क्या है इसमें, 4 डायरेक्शंस वी हैव, व्हिच इज नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। ओके, हम क्या कह रहे हैं इसको, कंपास रोज, ठीक है। ओके, सो okay, so I'm repeating it again, this is like थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, लेकिन अगर उसको अभी समझ लेंगे तो फिर ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एज यू नो दैट हम 1 किलोमीटर मैप पे शो नहीं कर सकते, इट इज डिफिकल्ट टू शो 1 किलोमीटर ऑन मैप, बिकॉज मैप जो होता है वो एक चार्ट साइज फॉर्म में होता है या फिर एक पेपर साइज फॉर्म में होता है। ओके, so how we are going to show 1 kilometer on the map, we will show we will represent it 1 kilometer by 1 centimeter only. As you can see in your rulers or scales, आप अपने स्केल पे देखें कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, आपने उसको शो करना है एज अ 1 किलोमीटर मैप्स पे, मैप के स्केल के अकॉर्डिंगली। ओके, if the map has to show a very large area, 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, यानी कि लेट्स सपोज के अभी हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर से दिखाया है, तो हो सकता है हमारे पास उस मैप में 1000 किलोमीटर हो जो हमें 1 सेंटीमीटर करके 10 सेंटीमीटर तक दिखाने हो, तो स्केल हमारा फिर उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मैप्स आल्सो हैव अ कंपास रोज। कंपास रोज इज व्हाट? 4 cardinal directions, which is north, south, east, and west. An arrow marked with N at the top, which means north. The compass rose shows the general directions. General directions are the cardinal directions which we already read about earlier. Learn. Okay. So, and the arrow tells us where the north is. आपने देखे ना कि हर डायरेक्शन के साथ एरोज बने हुए हैं उसके, जो हमें शो करता है कि where the east is, where the west is, where the north is, and where the south is. Okay. So, okay, miss. Okay, for what, Mars? Okay. So, after key, we have another topic, which is using atlas. Using an atlas. What is atlas? Do you have any idea about atlas? Anyone from you? If you know or have any idea about it, तभी आपने बोलना है, otherwise don't raise your hand. Okay, अस्कर समी, वही repeatedly वही वाले हाथ हैं. I want new students. आप सब बोले ना प्लीज। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला you want to say something? Abdullah, please unmute yourself. Abdullah, please unmute yourself. देखें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज बिल्कुल जेन्युइनली आपने हाथ जो है अपने उठाने होते हैं। हर कोई उठाता है तो फिर मुझसे वो जो असल बच्चा बात करना चाह रहा होता है ना, वो बच्चा मिस हो जाता है। ओके, सो वी हैव उमामा राव। उमामा राव, अनम्यूट योरसेल्फ उमामा। Assalamu alaikum, teacher. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू उमामा? I am fine. What about you, teacher? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yes, Umama. What are atlas? Do you have any idea about atlas?
I think Atlas is a book जिसमें टीचर मैप्स वगैरह के वो होते हैं. वो what? जैसे मैप्स, लाइक मैप्स की ड्राइंग्स वगैरह होती हैं. Okay, so you wanted to say that this is a kind of a key which we learn about map. Okay? Yes. Okay. Okay, anyone else? Fawad Aslam, unmute yourself. Okay. Aska Sami, unmute yourself. Miss, I have read the whole chapter. So in the last, Miss, the atlas is a book of maps. Miss, it shows the it has an index which shows the places, the names of the places Okay. and things. Okay, thank you, Aska. Thank you, Aska. That's enough. Okay, so atlas is what? Use an atlas to find geographical information about cities or countries. And atlas is a type of reference book. What is atlas? Atlas is a type of a reference book. Okay, this is a kind of a reference book that contains maps and other geographical information. Atlases are organized with indexes and a table of contents to make it easy for you to find the specific map you are looking for. So, do you understand what is atlases? Atlases बिल्कुल organized होते हैं index के साथ, table of contents के साथ, ताकि आपके लिए specific map को देखना बहुत आसान हो जाए, आप जगहों को बहुत easily देख सकें. You can say it like it is like a reference book in which the reference book shows you cities, countries, and a lot of things you wanted or you are looking for. Okay, so I am stop sharing this slide here because I have a video related to Atlas. So I think मुझे वो video जो है आपके लिए play करनी चाहिए. A small video, बिल्कुल छोटी सी है. So and please chat box में आपने मुझे फौरन acknowledge करना है कि आप सबको जो है video अब नजर आ रही है. Okay? Video जैसी नजर आए तो आपने मुझे बताना है. Everyone is able to see my screen? Scale name is Atlas 2. Okay, good. Everyone is able to see my screen? Yes, miss. Okay, so let's start. Is a book of maps. One way you can remember this is by saying, if you want to know where something's at, look at an atlas. Some key features in an atlas are map keys. The map key explains what each symbol of the map means. Another feature is the compass rose. This tells you which direction is north on the map. There are different kinds of maps. One type is a political map. It shows you political boundaries such as boundaries for countries, states, or counties. Another type of map is a physical map. It reflects the features of an area such as mountains, rivers, and lakes. The last type of map we will look at is an economic or resource map. This type of map shows you the main economic activities that occur in an area. This could be ways that people make money, such as farming, tourism, manufacturing, just to name a few. This type of map also shows you the main natural resources that can be found in an area. This could be things like rocks and minerals, petroleum, or what we know as oil or natural gas. So remember, if you want to know where political boundaries are, such as countries or states, or if you want to know the physical features of an area, like mountains and rivers, or if you want to know what kinds of economic resources an area is known for, like crops or manufacturing, or what natural resources can be found there, like gold or other rocks and minerals, the reference material or source that you need is an atlas. Atlas is Okay. So
So do you understand about atlas now? What are atlas? Atlas shows us the cities, countries, and whatever we are looking for. Okay, this is what we call the reference book. Okay, as you can see the atlas, this is a kind of atlas. You can see the key. Okay. Okay, we have a small activity in front of you. You have 7 types of blanks. So there is a key in front of you. Label. सबसे पहले तो आपके पास ये प्लस का जो मार्क है, this is what we call compass rule. You have to mention out where the north is, where the south is, where the east is, and where the west is. अपनी कॉपी पे रफ में जल्दी से प्लस के मार्क को बना के आपने NSEW इंडिकेट करना है राइट डायरेक्शन के साथ. अगर किसी का रह भी जाता है ये, नो नीड टू वरी. आप after this class I will send these 2 activities in your groups. तो आप उस वक्त भी करके मुझे जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं. I will consider it. Okay, so no need to worry. अगर misplace होता है, वैसे होगा नहीं इंशाल्लाह, we will cover in this in class. Okay, number 2, color the land green and the water blue. If you want to draw it, बहुत easy है. अगर draw करके color करके भेजना चाहती हैं तो वो भी कर लीजिएगा. तो अच्छी मज़ेदार एक्टिविटी हो जाएगी. आपने इसको A4 साइज पे ड्रॉ करके आप इसको कॉपी में भी पेस्ट कर सकते हैं. ओके, आपने करना क्या है, सिंपल A4 साइज एक पेपर लेना है. कलरफुल नहीं होना चाहिए, ओनली वाइट कलर इज अलाउड. आपने उस पर कलर करके आपने फिर बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना. और यू कैन शो राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. ओके, ब्लू ग्रीन आपने जो है वो लैंड करनी है और ब्लू आपने वाटर करना है. ओके, नाउ वी हैव 3 4 5 6 and 7. इन 3 4 5 6 and 7 we are going to write north south east or west to complete each sentence. Okay, so number 1 is the robots are dash of the campfire. Campfire robots के कहाँ है? As you can see in the key, what are campfires? Campfires are the, I am not going to tell the directions. मैं directions आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी. आपने खुद बताना है कि कैंप फायर रोबोट्स की किस तरफ है. आप अगर आप कंपास रोज को देखें तो आपको पता है कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है. तो कैंप फायर आपके सामने रोबोट्स की किस तरफ हैगी, आप खुद इसको जज कीजिए कि ईस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे है, नॉर्थ साउथ पे है या साउथ साइड पे. ओके. Okay, then we have the camping trailers are dash of the tents. Camping trailers जो हैं, key use करनी है आपने. Okay, you have to use the key for the better understanding. Camping trailer, you can see in the map. Camping trailer आपने बताना है camping trailers are dash of the tents. As you can see in key, what are the tents is, आपने बताना है कि tents जो हैं वो north पे हैं या south पे हैं. कैंपिंग ट्रेलर से टेंट्स कहाँ है, नॉर्थ पे है या साउथ पे है. ओके, नंबर 5, द केबिन्स आर डैश ऑफ द टेंट्स. व्हाट आर द केबिन्स? यू कैन सी, यू कैन यूज द की. ओके, सो these are the cabins. Okay, the question is cabins are dash of the tents. cabins कहाँ है, ईस्ट पे है या वेस्ट पे है. टेंट्स कहाँ है और cabins कहाँ है, आपने लिखना है where the cabins are. Okay, then we have the 6th one, the campfire is dash of the camping trailers. Campfires जो हैं, use the key again. What are the campfires? Okay, this is the, on number 4 we have campfire. The question is the campfire is dash of the camping trailers. Camping trailers से campfires कहाँ है? And the last one, the island is dash of the cabins. Island cabins का क्या कहाँ पर है? Islands जो हैं, the island is dash of the cabins. क्या है, आपने इसमें डायरेक्शन शो करनी है. ओके, you have to write the correct direction in each blank. Okay, so if you have left any of the blank, no need to worry. I will send this activity in your group, so you will better understand. और आप आराम से करके, मैं आपको 10 minutes दूंगी, आपने आराम से करके भेजनी है. Okay, this is the another activity we have related to the maps or the directions. Okay, so here is a map and globe.
As you can see, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. You have to write only numbers and आपने बताना है कि नंबर 1 पे जो चीज आपको दिखाई जा रही है वो क्या है। आपके पास वर्ड बैंक भी नीचे दिया हुआ है, आपने बताना है वो की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो कंपास रोज है, वो मैप है या फिर वो ग्लोब है। नंबर 2 आपने बताना है वो नंबर 2 क्या है। नंबर 2 एक मैप दिखा रहे हैं वो आपको या फिर वो की बनी हुई है, whatever it is. I think this is the simplest activity we have today. Okay, key है, some of you are saying that this is key. Okay, you have to write the correct answer in each blank. Then number 3 आपको बताना है कि what is number 3. number 3 आपके सामने है कि ऊपर जो स्टार बना हुआ है, this is what, मैप है, ग्लोब है, कंपास रोज है, यूनाइटेड स्टेट्स और की है. Then same is like number 4, is this globe or what? And then same is like with number 5, is this key, is this map, is this compass rose, or whatever the correct answer is. You have to mention in 5 blanks the correct answers. And अगर आपका अभी भी complete नहीं हुआ है काम, no need to worry. I am saying it again, no need to worry. Right after my class, I will send these 2 activities in your groups. You have to complete it and then send it to me on my WhatsApp number. Okay. Now moving forward to another slide, which is related to your homework. Today's homework is related to do question number 5 from page 5 in your neat copies. This is related to your notebook. आपकी जो text book है, I'm sorry, not notebook. आपकी जो text book है, on page number 5, you have question number 5, which is related to today's class. The question number 5 is find Pakistan using the index of an atlas. Write down the page number and the coordinates of grid reference. आपकी book में एक atlas map है. You have to find that atlas map in your book and write your answer. If you feel any confusion related to this question, just leave a text message on my WhatsApp. और बार बार उसको जवाब के लिए आपने मैसेज नहीं करना, मैं आपको हो सकता है तो ग्रुप पे बता दूं या इंडिविजुअली बता दूंगी, ठीक है? Okay, students, clear all? Okay, so this is your another homework. What you have to do in it, what your task is, you can see your task, applying what you know about map so far. आपका पता चल जाएगा कि आपको मैप सब कितने अच्छे समझ में आ गए हैं. What is your task? Your task is to design a map of an imaginary place. आपकी एक imaginary place हो सकती है, जैसे as you can see in the diagram, we have a treasure map which is included a scale, key, and compass rose. So you must ensure that your map has all of the following feature, which is title, scale line, compass rose, and key. I will share this slide in your groups as well, so you can better understand to see the picture. Okay, so now we have shining stars. Askasami, Fahad, Sumaika, Mutiba, Muhammad Ali, Muhammad Shiraz, Aru, Fatma, Mishal, Hadia, Shanze, Shanze, Maz, Sabbar Nadeem, Zayan Asaruddin, Fariha Farheen, Hiba Malik, Sayyida Hania, Sayyida Fatima Ehsan, Sayyid Shayan Heather, Hassan Amir, Faizan Alam, Sakina Farid, and Hifza Rasool. Okay, so keep it up, students. You did very well, and hope you are doing more good in future. So take care till then. इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज एवरीवन.